Hello students, so in this video we will be discussing important current affairs for the 1st of October. The session will be quite interesting and important. In this video we will be discussing 15 current affairs where we will be talking about 4th edition of the Global Reinvest Renewable Energy Investors Meet. Then we will be talking about a review meeting of the UN World Food Programme. Then India has been ranked 3rd in the Asia Power Index and where USA has secured the top position, and Trinidad and Tobago, they have also partnered to develop UPI-like payment systems similar to that of India. We will be discussing all these things in detail and it will be quite an interesting session, so stay tuned till the end. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. The content we provide is very interesting and important and it will be very beneficial in your competitive exams. Daily 5 a.m. in the morning, we upload our current affairs video, so do watch them as early as possible. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Then we are talking about national affairs first. First is 4th edition of the Global Reinvest Renewable Energy Investors Meet and Expo was held in Gujarat. First thing you need to remember that this is the 4th edition of the Global Reinvest Renewable Energy Investors Meet. Now what is this meet all about? Why you should know about this meet and what all comes in this meet? This is the flagship event of the Ministry of New and Renewable Energy, right? And this Reinvest, it stands for Global Renewable Energy Investors Meet and Expo. And this is the 4th edition of this flagship event of the Ministry of New and Renewable Energy. This was held at, location is also important, at Mahatma Mandir Convention and Exhibition Center, that is located in Gandhinagar, Gujarat. Location is important. It was held from 16th to 18th of September at Mahatma Mandir Convention and Exhibition Center, that is in Gandhinagar, Gujarat. And this is the 4th edition of this Renewable Energy Investors Meet and Expo held in Gujarat. Now during this you will be seeing multiple MOUs has been signed. First is REC Limited, that is Rural Electrification Corporation Limited. They have signed an MOU with renewable energy developers to fund the projects worth 1.12 lakh crore rupees. Second, during this Global Reinvest 2024, Gujarat has won numerous awards for their renewable energy achievements, and Gujarat was ranked among the top 3 in the overall renewable energy capacity, solar capacity and wind capacity. Take a note of this also. Then Prahlad Joshi, our Union Minister of Ministry of New and Renewable Energy, stated that the 4th edition of this Global Reinvest drew investment commitments worth 32.45 lakh crore rupees in the form of Shapat Patra by 2030. That means by 2030 this amount of money will be invested in these renewable energy sectors. Apart from this, also remember Torrent Power. They have committed an investment of 64,000 crore rupees in the renewable energy project. Apart from this, vertical solar farms will be introduced. Apart from this, vertical solar farms, they will be introduced to power agriculture, clean energy and production, right? And this will be done using the company that is Next to Sun Germany, right?
And if we are talking about the company from Germany, remember India and our Germany. These two countries, they have jointly launched a platform to boost the global renewable energy investment. So investment in renewable energy. Joint projects has been launched here. Correct. Here you can see, apart from this, Gujarat, they have also launched Mission 100 gigawatt. So Gujarat's Chief Minister Bhupendra Patel has launched Mission 100 gigawatts of renewable energy in Gujarat and has released this Gujarat Energy Vision 2047 during the Global Reinvest 2024. The mission aims to install 100 gigawatt of renewable energy by 2030 in Gujarat, and it will help in achieving the renewable energy targets of India. Next is Ministry of Health and Family Welfare has released National Health Accounts Estimates for India 2020-21 and 2021 to 2022. So we are talking about the National Health Account Estimates, right? If we talk about them in detail, remember first thing that Ministry of Health and Family Welfare, they have released this National Health Accounts Estimates for India for the period 2021 and 21-22. These are the 8th and 9th edition of these annual reports that has been released by Ministry of Health and Family Welfare. As per the data released here, the out of the pocket expenditure of the total health expenditure has decreased significantly from 64.2% in 2013-14 to almost 39.14% in 21-22. But also remember, the inflation in the healthcare sector is close to 14% to 20%. Between this, we are seeing that annually the amount of money that you are spending on the health is increasing at a rate of 14 to 20% annually. Apart from this, if we look at some of the key points here you can see, as per the latest NHA estimate, the out of the pocket expenditure has decreased from 64.2% in 13-14 to 39.4% in 21-22. And as per this NHA, the share of the government health expenditure in the overall GDP of the country has increased from 1.13% in 14-15 to 1.84% in 21-22. Also, GHE, that is your government health expenditure, in terms of the general government expenditure, has also increased from this to 6.12%. Then friends, this NHA, that is your National Health Accounts, remember the reports here are provided based on the systematic description of the financial flows of the health system of India by various resources such as your healthcare providers, right, services, then your various clinics, hospitals, and so on. Correct. Next, here you can see some of the key indicators of this NHA estimate for India for 21-22. The share of the GHE that was in 2014 and then it is in 21-22. So you can see all the shares here, right, in percentage terms. Next, okay, one more thing. Tell me the top 3 states which have the maximum contribution in the in your total health expenditure. So which is the state that has the maximum share here? Maharashtra, followed by Uttar Pradesh, followed by West Bengal. These were the top 3 states which have contributed the maximum in the total health expenditure. Next is the Secretary of Department of Agriculture and Farmers Welfare, Dr. Devesh Chaturvedi, chaired a review meeting of UN World Food Programme, CPAC. What is CPAC? Country Program Advisory Committee. So this was the remember Dr. Devesh Chaturvedi, as you can see him in the picture, right? He chaired the first meeting of the Country Program Advisory Committee to review the implementation of the CSP 23 to 27 with representatives from the United Nations World Food Programme in New Delhi. Where was this meeting chaired? This was the first meeting of the CPAC. Where was it chaired? In New Delhi. It was chaired by whom? It was chaired by Dr. Devesh Chaturvedi, the Secretary of the Department of Agriculture and Farmers Welfare. Right? This CPAC, it has been constituted under the chairperson Dr. Devesh Chaturvedi, and the key function of this CPAC is to basically coordinate and review the progress of CSP, right, of this CSP for 23 to 27. Now the next thing you will be asking, sir, what is this CSP for 23 to 27? CSP here stands for Country Strategic Plan,
right? And in this country strategic planning, we will be discussing everything here related to how we will be enhancing our systems, protection systems, how we'll be talking about exports, how we will be talking about bringing nutritious foods in India, banning the unhygienic food, correct? So talking about all these things for country strategic plan for 23 to 24 23 to 27, this meeting, that is the first CPAC meeting, was chaired by Dr. Devesh Chaturvedi. Next thing, remember, if we talk about UN World Food Program, who is the executive director here? Cindy McCain, headquartered in Rome, Italy. Next, and here you can see an MOU has also been signed between the Department of Agriculture and Farmers Welfare and UN World Food Program. This MOU was basically to address the nutritional priorities in food security and nutrition through capacity building and technical support. As per the MOU, this country's strategic plan for 23 to 27 will focus on 4 strategic outcomes that are more effective and efficient national food-based social protection system, rising consumption of diverse, nutritious and fortified foods, enhancing the social and financial mobility of women, and strengthening the adaptive capacity to build climate resilient livelihoods and food systems. Next is international affairs. India has ranked 3rd in the Asia Power Index 24 and USA has secured the top position here. We are talking about the Asia Power Index. That means in Asia continent, which is the country that is the most powerful, right? So India has ranked 3rd here. But first thing, remember, this Asia Power Index released by which organization? It is Lowy Institute that has released this index. This Lowy Institute is based out of Sydney, Australia. Our India is standing at 3rd position here. Correct? Take a note of this. In this Asia Power Index, the interesting thing to remember here is that it is USA that has secured the first position. USA has strengthened their position in Asia and now they are standing at the first position. On second position is China and our India is at 3rd position in this index. Right? Take a note of this. Moving on. Here you can see the index. Correct, and this marks the first edition of the Asia Power Index where India has raised their power score, correct, and they are standing at the 3rd position. This index ranks 27 countries and territories based on their resources and how they use them. And here you can see the index and the ranking. Next is banking and finance. NIPL and Trinidad and Tobago, they have recently partnered to develop the UPI-like payment system. NIPL, first thing. What is NIPL stands for? National Payment Corporation of India, International Payments Limited. So this is your NIPL. They have recently partnered with T&T, and this is also written as NIPL, right? Because NIPL, this is the wholly owned subsidiary of National Payment Corporation of India. Correct? So they together recently partnered to establish a UPI-like payment system in TNT, that is Trinidad and Tobago, because we know that India has been a game changer in the payment industry and this UPI has made revolution, or this has brought revolution in the payment sector. Correct? So in order to implement similar kind of system in their own country, NIPL, they have partnered with TNT to set up this UPI based system. This will help us to establish person to person as well as person to merchant transactions. At present, using the UPI, Indians can pay to the merchants in Bhutan, France, Mauritius, Nepal, Singapore, Sri Lanka, UAE with the help of this UPI. Then if we talk about NIPL, who is the Chief Executive Officer here? Ritesh Shukla. Where is the headquarter? It is in Mumbai, Maharashtra, and it was established in 2020. Moving on. Next is PNB, that is Punjab National Bank. They have introduced multi-currency world travel card for international travelers. I repeat, PNB, that is your Punjab National Bank. They have launched PNB multi-currency world travel card. This is a prepaid foreign currency card that will allow the users to load and manage multiple currencies on a single card. This card supports 6 currencies, that is your US dollar, Euro, British Pound Sterling, UAEs, that is your AED,
that is your United Arab Emirates dirham, Canadian dollar, and Singapore dollar. So these are the 6 currency that will be supported by this multi-currency world travel card for international travelers. The card may be issued against a cash for an amount below 50,000 rupees, and it is also equipped with 3D secure and chip and personal identification number technology. This card will offer the option to lock in exchange rates at the time of loading, helping the travelers to avoid fluctuations in the currency while they are traveling abroad. So this has been launched by PNB. If we talk about Punjab National Bank, who is the Managing Director and Chief Executive Officer here, Atul Kumar Goyal, headquartered in New Delhi, and there is a tagline for this bank, that is the name you can bank upon. Next is Bob Card and RuPay. They have partnered to launch EMI feature on UPI payments. I repeat, BOB Card Limited, that is a NBFC and a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda. They have recently partnered with RuPay to launch EMI feature on the UPI payments, allowing the users to convert their purchases into EMI for a more convenient payment experience. Payments that can be made via UPI at both online and offline merchants, with the option to convert them into EMI at checkout options. Take a note of this. Next is AU Small Finance Bank has announced partnership with Kotak Life offering life insurance solutions. I repeat, AU Small Finance Bank, they have partnered with Kotak Mahindra Life Insurance Company to offer life insurance solutions, expanding AU Small Finance Bank's product offerings and enhancing financial security for their customers. This collaboration will extend to both new and existing customers, including the former Fincare as Small Finance Bank branches also. Also, this partnership will help the AU Small Finance Bank to strengthen their presence in South India. Next is India has extended $50 million budgetary support to Maldives for another year. I repeat, our country India, they have extended the budgetary support to the government of Maldives in the form of rollover worth $50 million treasury bills for another year at the request of Maldivian government. The extension has been granted by State Bank of India, that is India's largest public sector bank, which has subscribed the $50 million T-bill, that is your treasury bills that are issued by the Ministry of Finance of Maldives for another year. And this marks the second rollover granted by the government of India in 2024. The first rollover was of $50 million US dollar treasury bills that was granted in May 2024, and now this is the second rollover of another $50 million. Next is SEBI. SEBI has allowed mutual funds to sell credit default swaps to the boost corporate bond liquidity. I repeat, on 20th of September, SEBI has allowed mutual funds to sell credit default swaps, a move which will aim to boost the liquidity in the corporate bond market. This will remember, earlier the mutual funds could only engage in these CDS, that is credit default swap transactions, as buyers, basically to hedge the credit risk on the corporate bonds within the fixed maturity plans that last over 1 year. But now they will be able to sell them, correct? And with this, the mutual funds are allowed to sell these CDS within the scope of investing in the synthetic debt securities that will be backed by the cash or government securities or treasury bills. Apart from this, remember, the total exposure for a scheme, including both buying and selling of these CDS, should not exceed 10% of the scheme's asset. As well as SEBI, they have directed these mutual funds to disclose the details of their CDS transactions, like the rating of CDS seller and the deals with the sponsor group companies. Next is environment. Exostoma sentione. This is the new catfish species that has been discovered from Nagaland. As you can see here, this is the new catfish species, that is Exostoma sentione. This is the new cat species that has been recently discovered from Nagaland. Apart from one more thing you need to remember, that India has recorded the first sighting of a rare reef fish of Andhra Pradesh coast. Right? Remember this, and this rare reef fish has been named as Antomarcodus thalassinus. This is the name of this rare reef fish that has been first time sighted off the coast of Andhra Pradesh. Next is Obituary. Italian striker Salvatore Toto passed away recently. I repeat, Italian striker Salvatore, famously known by the name Toto, has recently passed away. Next is books and authors. Sukhwinder Singh Sukhu,
right? He is the Chief Minister of Himachal Pradesh and he has released two books. One is Jalandhar Peeth Ka Rahasya and second is Mushtaraka Khata. I repeat, Mushtaraka Khata. This is the second book and the first book is Jalandhar Peeth Ka Rahasya. These are the two books released by the Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu. Both of these books are authored by Ajay Prashar, the Director of Information and Public Relations of the North East Council. Correct? If we talk about Jalandhar Peeth Ka Rahasya, this book provides an insight of the historical and religious significance of various peeths of Himachal Pradesh. And this Mushtaraka Khata, this is the compilation of 16 short stories that shows various aspects of everyday life. Next is important days. World Tourism Day, it is observed on 27th of September. This day is observed to create awareness about the importance of tourism, and this tourism, remember, it is one of the most important driver of economic growth also, right? And this day is observed so that the tourism can be held sustainably and it should not harm environment. Also, this year we observed the 44th edition of the World Tourism Day. This day is observed by UN World Tourism Organization and there is a theme for this day, tourism and peace. Correct? And UNWTO, they have chosen Georgia as the host country for the World Tourism Day. Correct? Remember this is an interesting question and can be definitely asked, that which country has been chosen as the host country for the World Tourism Day, that is the 44th World Tourism Day in 2024. It is Georgia. Next is International Day for the Elimination of Nuclear Weapons. It is observed on 26th of September and we know nuclear weapons, they are highly dangerous and they pose a risk to the humanity, because if one country launches a nuclear weapon, then definitely the other country on which the nuclear weapon was launched will also be the launching, and similarly it will lead to a chain reaction and that can eliminate the human race from on earth. So it is considered very dangerous. It is a deadly weapon. So in order to eliminate the nuclear weapons, this day, that is International Day of the Elimination of Nuclear Weapon, is observed on 26th of September. Right? First time this day was observed in 2014. Next. Okay, one more thing you remember here. This is your Strategic Arms Reduction Treaty, that is START. This was a bilateral treaty between United States and Soviet Union on the reduction and elimination of strategic offensive arms. It entered into a force in 1994 and expired in 2009. What this treaty was is basically that both USA and USSR, that was your Soviet Union, they will be reducing their nuclear arsenals. But as this mentioned that in 1994 this treaty was signed, but it ended in 2009 because none of the country followed this. So that's all for the day, students. Now let's move to one-liners. Fourth edition of the Global Reinvest Renewable Energy Investors Meet and Expo was held in Gandhinagar, Gujarat. Ministry of Health and Family Welfare has released National Health Accounts Estimates for India for 2021 and 21-22. This is the 8th edition of it and this is the 9th edition. Secretary of Department of Agriculture and Farmers Welfare, Dr. Devesh Chaturvedi, has chaired the first edition of the review meeting of the UN World Food Programme CPAC. Then India has ranked third in the Asia Power Index 2024. It is USA that has secured the top position. China is on second and our India is on third position. Then NIPL, that is the wholly owned subsidiary of NPCI, they have partnered with Trinidad and Tobago to develop UPI-like payment system in the Trinidad and Tobago. Next, Punjab National Bank, they have introduced multi-currency world travel card for international travelers. Bobcard, that is a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, they have partnered with RuPay to launch EMI feature on UPI payments. Then AU Small Finance Bank, they have announced the partnership with Kotak Life offering life insurance solutions. Then India has extended $50 million budgetary support to Maldives for another year. SEBI has allowed the mutual funds to sell credit default swaps to boost the corporate bond liquidity. Then Exostoma sentione, this is the new catfish species that has been discovered from Nagaland. Next is Italian striker Salvatore, known as Toto, has recently passed away. Sukhwinder Singh Sukhu has released two books, that is Jalandhar Peeth Ka Rahasya and Mushtaraka Khata. These are the two books launched by Sukhwinder Singh Sukhu but authored by Ajay Prashar. Then World Tourism Day, it is observed on 27th of September and this is the 44th edition of the World Tourism Day. Next is International Day for the Elimination of Nuclear Weapon, observed on 26th of September.
So that's all for the day, students. I hope the session was good. Now let's move to some revision part. Who has been recently appointed as the Finance Secretary of the Ministry of Finance? So Tuhin Kanta Pandey. Tuhin Kanta Pandey has been appointed as the Finance Secretary of the Ministry of Finance. He will be succeeding whom? TV Somnathan. Correct. Apart from this, if we talk about Atul Kumar Chaudhary here, remember he became the new Secretary of TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India. Next, in September, India successfully launched Agni 4 missile from the integrated test range in Chandipur, Odisha. And Agni 4 belongs to which type of missile? So this Agni 4, remember, this is a intermediate range ballistic missile. IRBM, intermediate range ballistic missile. It was Agni 4, right? It was tested where? In ITR Chandipur, that is in Odisha, and this is the fourth missile of the Agni series. It is developed and designed by which organization? It is designed and developed by DRDO. It is a surface to surface missile, right? And it has a range of almost 4,000 kilometers, and it is also capable of carrying nuclear warheads. Next, which shipbuilding company has recently launched two indigenous designed and constructed anti-submarine warfare shallow watercraft that are named Indian naval ship Malpe and Indian naval ship Mulki? So they have been designed and developed by Cochin Shipyard Limited. They are anti-submarine warfare shallow watercraft ships, and they are INS Malpe and INS Mulki. These are the two one, and they have been developed by Cochin Shipyard Limited. If we talk about the fourth one, it is Indian INS Malpe, and the fifth one is INS Mulki. Next, who has recently won the men's single title at the US Open title? Right, so in the US Open, the men's title was won by Jannik Sinner. If we talk about Jannik Sinner, he is from Italy. Right, he is the world's number one tennis player, and he has won the US Open title. If we talk about the women's single title, right, women's single title was won by Arnya Seblenka. Right, she's also world's number one in women's category, and Anina Seblenka, she is from Belarus, and she has won the women's single title here. Next, the CCI approved the National Investment and Infrastructure Fund proposal to acquire additional stake of which company? So additional stake of Ather company. Ather, this is a company that is making electric vehicles, two-wheeler electric vehicles. Right. Next, which tribe has recently got habitat rights to protect and preserve the natural entities, sacred sites and places of religious and spiritual importance located within their habitat? It is Sauro. Right, this is the tribe, correct, and this tribe is located where? It is in Odisha, and they became the tribe that got the habitat right to protect and preserve the natural entities, the forest there. Also, Sauros, they became the fifth tribal group in the state to get this habitat right. Next, who has been recently shortlisted for British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding 2024? So Amitav Ghosh, right? Amitav Ghosh was shortlisted for the British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding for his book that is Smoke and Ashes. So what is the name of the book here? Smoke and Ashes, right? Apart from this, Ghosh's latest work, this Smoke and Ashes, is among the 6 titles competing in the top prize, and this book examines the far-reaching impact of the global opium trade from the 18th century till present-day crisis. Next, name the military exercise between India and United States of America that has recently commenced at the Foreign Training Node in Rajasthan. What is the name of that exercise? It is Yuddhabhyas. Right, it began at the Foreign Training Node that is in the Mahajan Field Firing Range of Rajasthan. This exercise is held between which two countries? It is held between our India and United States of America. Correct. Then remember, this was the 20th edition of this exercise. Correct. It was held in Rajasthan, and if we talk about the 19th edition of this exercise, it was held in Alaska, USA. Alaska, USA. Next, in which year Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana scheme was launched? So this scheme was launched in 2019 by Prime Minister Narendra Modi. It was launched in Jharkhand. This scheme was administered by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
This scheme is basically for the individuals who are between 18 to 40 years of age, and under the scheme they will be contributing between 55 to 200 rupees per month, and this will be a basically to provide them pension when they turn 60 years of age. So as per the age between this criteria, they will be investing the amount here and they will be getting 3000 rupees per month when they turn 60 years of age. So this fund or this type of pension will be managed by LIC. Next, which defense company has recently signed a contract worth 26,000 crore rupees with Ministry of Defense for procurement of 240 AL-31 FP aero engines for Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet of the Indian Air Force? So which is the defense company? It is Hindustan Aeronautics Limited. The defense contract is worth 26,000 crore rupees, and this will be for the procurement of 240 aero engines, and these aero engines will be used where? They will be used in Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet. Correct. Next thing, remember, these aero engines, they will be manufactured where? They will be manufactured in the Koraput district. Where is this Koraput district? It is in the state of Odisha. Next, which day is declared as the World Rural Development Day by United Nations General Assembly? So, World Rural Development Day is observed on 6th of July by United Nations General Assembly. And for the first time, remember, United Nations I correct myself. This day is declared that it will be observed on 6th of July, and it was declared by United Nations General Assembly that from 2025 onwards we will be observing this day. So we can say the first ever edition will be observed in 2025 on 6th of July, and this day is basically observed to make sure that the rural areas are also developed. Next, which country has recently become the 101st country to join International Solar Alliance? So it was Nepal. Paraguay, it was 100th country to join International Solar Alliance, and Nepal was 101st country to join International Solar Alliance. Next is our homework section. You have to give me 3 current affairs related to the defense sector for the last 3 months. So that's all for the day, students. Do hit the like button and do comment below what are your views for the same. Also, students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is very interesting, and we make sure that we provide the video 5 a.m. in the morning. So now, students, let's move to the Hindi segment of this video that will be beneficial for all the students who want to study the same content in Hindi. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 1 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 15 करंट अफेयर्स रहेंगे स्टूडेंट्स, जहां पर हम बात करेंगे 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट्स एंड एक्सपो की, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुई। देन हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ अकाउंट्स का डाटा रिलीज किया गया, 8th एंड 9th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट रिलीज की गई। देन हम बात करेंगे यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की CPAC की मीटिंग हुई, पहली एडिशन थी इस मीटिंग की, किसके द्वारा चेयर की गई वो बात देखेंगे। एशिया पावर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, एंड हम बात करेंगे कौन सी कंट्रीज UPI लाइक पेमेंट सिस्टम अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करना चाह रही है। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बहुत अच्छा कंटेंट हम डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, एंड हमारी वीडियो सुबह 5 बजे डल जाती है। तो जो बच्चे मॉर्निंग में हमारी वीडियो देखना चाहें, उठते ही सबसे पहला काम आप ये कीजिए, इवन अपने पेरेंट्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सबके साथ इस चैनल को शेयर करिए, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes.
A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स पर। हम बात कर रहे हैं चौथे एडिशन ऑफ ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो की, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुई। देखो सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखनी है कि चौथा एडिशन है। फिर इसके बाद याद रखना है ये क्या है, ये आपकी एक रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट है। मतलब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट करेंगी, पैसा डालेंगी, राइट, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ग्रो कर सके। ये जो ग्लोबल री इन्वेस्ट प्रोग्राम है ना, ये याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक फ्लैगशिप इवेंट है, जिसका भी 4th एडिशन हमें देखने को मिला। 16 से लेकर 18 सितंबर तक ये आपका इवेंट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये 3 डे लॉन्ग समिट थी, जिसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर यहीं पे एक और चीज याद रखेंगे, अब जैसे REC लिमिटेड, ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने एक MOU साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें वर्थ 1.12 लाख करोड़ रुपीस। इसी के अलावा याद रखेंगे ड्यूरिंग दिस गुजरात ये एक स्टेट निकल के आई जिसको न्यूमरस अवार्ड्स मिले फॉर रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट्स, एंड इट वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 3 इन द ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिसमें सोलर पावर, विंड पावर कैपेसिटी आ जाती है, राइट। यहीं पे याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कि 3.45 लाख करोड़ रुपीस की यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बाय 2030, एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ग्रो करने का यहाँ पे काम करेंगे। इसी के अलावा कुछ और चीज़ याद रखेंगे, जैसे अगर हम बात करें टॉरेंट पावर, इन्होंने कमिट किया एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 64,000 करोड़ रुपीस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, राइट। इसी के अलावा अगर हम बात करें वर्टिकल सोलर फार्म सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई है, ताकि जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में है वहां पर हम क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। इसी के अलावा एक और याद रखेंगे, इंडिया ने जर्मनी के साथ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बात की। देन एक और चीज याद रखेंगे, गुजरात ने लॉन्च किया है मिशन 100 गीगावाट, राइट। ये मिशन 100 गीगावाट क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव कर सके ऑफ 100 गीगावाट, एंड ये गुजरात का विजन है ऑफ 2047, करेक्ट। एंड यहीं पे है कि मिशन एम्स टू इंस्टॉल 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 इन गुजरात, जिससे जो हमारा टारगेट है विजन 2047 का वो हम जल्द से जल्द अचीव कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने रिलीज किया नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर इंडिया 2021 एंड 21-22 के लिए। देखो नेशनल हेल्थ अकाउंट बेसिकली ये क्या बताता है कि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है लोगों के द्वारा, राइट। यहाँ पे जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो कितना है, यहीं पे एक डाटा बताता है कि 2013-14 की बात करें तो जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था लोगों का आउट ऑफ द पॉकेट, उन्होंने अपनी पॉकेट से पे करा, वो था 64.2%। वही अब गिरकर 39.4% रह गया है 2021-22 में। ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है हेल्थ सेक्टर में, जो दिखाता है कि सरकार काफ़ी हेल्प कर रही है लोगों तक हेल्थ ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए। इवन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जो हेल्थ इन्फ्लेशन है वो आपका 14 से लेके 20% के बीच में रहती है, कि हर साल आपका जो ट्रीटमेंट है वो 14 से 20% महंगा हो जाता है। इवन एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आपसे मैं पूछूं जो टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो कौन सी 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने इसमें टॉप किया। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है महाराष्ट्र, जिन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। महाराष्ट्र के बाद आ जाती है आपकी उत्तर प्रदेश के बाद आ जाती है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड यहीं पर आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, राइट, ओवरऑल जीडीपी का हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1.13% टू 1.4884%, मतलब दिखा रहा है कि 2014-15 से 21-22 के कंपैरिजन में सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है इन द हेल्थ एक्सपेंडिचर, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो भी सुविधा है वो पहुंचाने के लिए। इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचए का एस्टिमेट ऑफ इंडिया 21-22 के लिए, ये वो टोटल आप सारे देख सकते हैं 2014-15 एंड 2021-22 के कंपैरिजन में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सीपीएसी मीटिंग। सीपीएसी क्या है? कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। तो ये पहली मीटिंग थी कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की, जो रिव्यू करती है कंट्री स्ट्रेटेजिक प्लान 2023 से 2027 के लिए। यहाँ पे मेन एम रहेगा कि किस तरीके का फूड हम ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके के एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फूड ग्रो किया जा रहा है क्या वो न्यूट्रिशियस है, क्या जो लोगों के द्वारा खाना खाया जा रहा है क्या वो न्यूट्रिशियस है, क्या जो हम ग्रो कर रहे हैं उसमें कैसा हम
सॉइल में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, क्या क्या केमिकल्स डाल रहे हैं, राइट। इवन जो हम कंजप्शन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजप्शन भी बढ़ती जा रही है, राइट। तो उस कंजप्शन को क्या हम मीट कर पा रहे हैं, एंड क्या हम एक क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स को बना पा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे हमारी क्रॉप्स पे इफेक्ट होता है। और अगर क्लाइमेट आप देखा होगा इंडिया में जब मानसून ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, उससे क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ता है, और इनडायरेक्टली जो प्राइसेस होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, राइट। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में। तो इन चीज़ों पे भी बात करने की यहाँ पे बात की गई। एंड ये जो पहली मीटिंग थी ना इस सीपीएससी की, ये चेयर किनके द्वारा की गई, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी। आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, सिंडी मैकेन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, रोम, इटली में। एक और चीज याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में यहाँ पे एक एमओयू साइन हुआ टू एड्रेस द नेशनल प्रायोरिटीज इन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, कि कैसे हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस खाना लोगों को तक पहुंचा सकें। इसके लिए जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की हेल्प करेगा। रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट पॉपुलेशन है। इवन आपने कुछ दिन पहले सुना होगा बिल गेट्स, राइट, इन्होंने भी सराहा है इंडिया के एफर्ट्स को कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों को खाना प्रोवाइड कराना और जो माल न्यूट्रिशन है उसको एलिमिनेट करना, करेक्ट। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में है जिनको डेली बेसिस पे सरकार के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है। तो ये बिल गेट्स के द्वारा भी यहाँ पे सराहा गया है इंडिया के एफर्ट्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। इंडिया की रैंक आई 3rd इन द एशिया पावर इंडेक्स 2024 में। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखेंगे, यूएसए जो कि एशिया का पार्ट भी नहीं है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है इन दिस एशिया पावर इंडेक्स। मतलब एशिया में यूएस का काफी बड़ा दबदबा है एंड यूएस का काफी ज्यादा डोमिनेंस है एशियन कॉन्टिनेंट में, करेक्ट। तो फर्स्ट पोजीशन पे एशियन पावर इंडेक्स में यूएसए, सेकेंड पे आ जाता है चाइना, और थर्ड पर आ जाता है हमारा इंडिया। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये रिलीज किसके द्वारा करा गया, ये रिलीज किया गया लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये लोवी इंस्टीट्यूट है कहां पर, ये है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का। ये आपका लोवी इंस्टीट्यूट रहेगा, करेक्ट। तो फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे हमारा इंडिया आ जाता है। लोवी इंस्टीट्यूट की बात करें तो सर फ्रैंक लोई, ये यहाँ के चेयरमैन है ऑफ दिस बोर्ड लोवी इंस्टीट्यूट के। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं आप यहाँ पे कंट्रीज की रैंक देख सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी एनआईपीएल क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये होली ऑन सब्सिडरी है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो ये हो गया आपका एनआईपीएल। इन्होंने अभी पार्टनर किया ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ, ताकि ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में भी हम यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम को ला सकें, क्योंकि हम जानते हैं यूपीआई जो एक गेम चेंजर है, एनपीएसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016-17 में इसको लाया गया था। एंड इससे हमने देखा था कि बहुत एक रेवोल्यूशन के तौर पे ये आया था, काफ़ी सारे लोगों ने, करेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग, मतलब हर मर्चेंट, हर दूसरी दुकान पर आपको क्यूआर कोड देखने को मिलता है, आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। इवन जो सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, वेंडर्स होते हैं, आप वहाँ पे भी जाएंगे ना, वो भी आपको क्यूआर कोड दे देंगे कि आप पेमेंट ऐसे कर दो, कैश पे मत करो। तो ये एक रेवोल्यूशन के तौर पर आया है, राइट। एंड हमने देखा है कि बहुत मैसिव स्केल पे यहाँ पे इंडिया में ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती हैं। एंड इसी के ऑ में दूसरी कंट्रीज भी सिमिलर काइंड ऑफ पेमेंट सिस्टम को अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करना चाहती हैं। एंड इसीलिए ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ने पार्टनर किया एनआईपीएल के साथ कि यूपीआई बेस्ड सिस्टम यहाँ पे लाया जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें, इंडिया के जो मर्चेंट्स हैं वो बाहर की कंट्रीज के मर्चेंट्स में पेमेंट करना चाहें यूपीआई से, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे भूटान में, फ्रांस में, मॉरिशस में, नेपाल में, सिंगापुर में, श्रीलंका में एंड यूएई में। एनआईपीएल की अगर मैं बात करूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, रितेश शुक्ला। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। कब इनकॉर्पोरेट किया गया, 2020 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड को फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। ये बेसिकली कार्ड क्या है कि आप मल्टीपल करेंसीज में से पेमेंट कर पाएंगे। एंड 6 मेजर करेंसीज को ये सपोर्ट कर रहेगा, यूएस डॉलर को, यूरो को, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को, दिरहम को जो कि यूएई की करेंसी है, कैनेडियन डॉलर को एंड सिंगापुर डॉलर को। ये 6 करेंसीज को यहाँ पे सपोर्ट करेगा, करेक्ट। इवन इस कार्ड को आप इंडिया, नेपाल, भूटान में ग्लोबली यूज कर सकते हैं। इस कार्ड को आप ग्लोबली यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट
इंडिया, नेपाल एंड भूटान। करेक्ट, इन कंट्रीज के अलावा आप इसको ग्लोबली यूज कर पाएंगे। इसी के अलावा अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो इनके एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? अतुल कुमार गोयल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड इनकी टैगलाइन याद रखेंगे, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉब कार्ड। ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, एंड इन्होंने रुपे के साथ पार्टनर किया ताकि ईएमआई फीचर को लॉन्च किया जा सके ऑन यूपीआई पेमेंट। मतलब आप यूपीआई से कुछ पेमेंट करना चाह रहे हैं, मान लो 10,000 रुपये की आपकी पेमेंट है, लेकिन आप उसको वन गो में नहीं करना चाह रहे, आप उसको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में बनाना चाह रहे हैं, ईएमआई के तौर पर पे करना चाह रहे हैं, तो ये फीचर अभी बीओबी कार्ड ने प्रोवाइड कराया है विद द हेल्प ऑफ रुपे। करेक्ट, आप यूपीआई पेमेंट्स को अपना ईएमआई में कन्वर्ट करा पाएंगे आप। Correct, take a note of this for both offline and online payment also, and tier 2 and tier 3 cities में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है कोटक लाइफ के साथ, करेक्ट, ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। तो एक तरीके का हम ये क्या कह सकते हैं, बैंक है, इन्होंने किस कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनर किया ताकि इंश्योरेंस अपने सेंड कर सके अपने कस्टमर्स को। तो ये क्या है, एक तरीके का बैंकरेंस है, एंड इससे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो प्रेजेंस है साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है इंडिया ने एक्सटेंड किया $50 मिलियन का एक बजटरी सपोर्ट टू मालदीव्स फॉर अनदर ईयर। इससे पहले भी यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स के थ्रू इंडिया ने $50 मिलियन की हेल्प प्रोवाइड कराई थी मालदीव्स को, करेक्ट, लास्ट ईयर, करेक्ट, वो था पहला रोल ओवर, और अब ये सेकंड हेल्प है, मतलब दूसरी बार इंडिया ने इसको हेल्प मालदीव्स को हेल्प किया है $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स बाय करके, करेक्ट। तो टोटल हम बोले $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल से इंडिया अब मालदीव्स की हेल्प कर चुका है। मूविंग ऑन, सेबी ने अलाउ किया म्यूचुअल फंड्स को कि वो अपनी जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स हैं, सीडीएस हैं, उनको सेल कर सकते हैं टू बूस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड लिक्विडिटी। अभी तक ये अलाउड नहीं था, ये जो सीडीएस हैं, करेक्ट, इनको बाय कर सकते थे एंड अपने जो क्रेडिट रिस्क है उसको हेज कर सकते थे ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बट अब यहाँ पे सेबी ने अलाउ कर दिया है कि अब जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को सेल कर सकते हैं टू मेंटेन द लिक्विडिटी। इससे क्या होगा कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट, इनको अलाउ किया जाएगा कि अपनी सीडीएस को सेल कर सके एंड इससे लिक्विडिटी बनेगी, एज वेल एज पर द जो नई रेगुलेशंस, नई गाइडलाइंस आई हैं, तो जो टोटल एक्सपोजर होगा फॉर अ स्कीम इंक्लूडिंग बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सीडीएस शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द स्कीम्स एसेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट पर। एक्सोस्टोमा सेंटियोने, ये नई कैट्स फिश स्पीशीज है जो कि डिस्कवर की गई है नागालैंड में, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया ने रिकॉर्ड की पहली साइट सीइंग ऑफ अ रेयर रीफ फिश। कहाँ पर? ये रीफ फिश आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे मिली जिसका नाम है एंटोमार्कोडस थैलेसिनिस, राइट। ये एक रेयर रीफ फिश है जो कि कहाँ पे डिस्कवर की गई है? आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑब्यूटरी। इटालियन स्ट्राइकर सेल्वाटोर, जिनको टोटो के नाम से जानते थे, उनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 59 इन पेल्मरो, इटली। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, इनके द्वारा 2 बुक्स यहाँ पे अभी रिलीज की गई। बुक्स का नाम है जलंधर पीठ का रहस्य एंड दूसरी बुक है मुश्तरका खाटा। तो ये 2 बुक्स यहाँ पे रिलीज की गई हैं। इन दोनों बुक्स को ऑथर किया गया है अजय पराशर के द्वारा, जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। अगर मैं बात करूँ जलंधर पीठ का रहस्य, ये बुक में बेसिकली जो हिस्टोरिकल रिलीजियस एंड सिग्निफिकेंस है पीठ्स की ऑफ हिमाचल प्रदेश वो दर्शाया गया है इसमें। एंड यहाँ पे मुश्तरका खाटा, ये आपकी 16 शॉर्ट स्टोरीज का कंपाइलेशन है ऑफ डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 सितंबर को, ताकि टूरिज्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। एंड टूरिज्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक, हमारे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट देने में बहुत मदद करता है टूरिज्म। इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने का भी ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इवन जो टूरिस्ट होते हैं उनको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखें, कहीं घूमने जाए तो वहाँ पे एरिया को हम खराब ना करें, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, वहाँ पे सफाई मेंटेन कर सकें, उसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका हमने 44th एडिशन अभी ऑब्जर्व किया है, ये याद रखेंगे। ये डे UN
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसकी एक थीम है जो कि है टूरिज्म एंड पीस। ये थीम आपकी 2024 की थीम रहेगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर टॉपिक का वो है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को अभी होस्ट कंट्री चूज किया है फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म डे फॉर 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2024। 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ये डे। बेसिकली हम जानते हैं न्यूक्लियर वेपन्स बहुत डेडली होते हैं एंड कहा जाता है कि अगर एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पे अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़े तो वो दूसरी कंट्री भी अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो भी छोड़ेगी एंड इससे एक चेन रिएक्शन डेवलप हो जाएगा जो कि हमारी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट हो सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए इस चीज के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कि लोग यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को अवॉइड कर सकें, कंट्रीज उनको अवॉइड कर सकें एंड पीसफुली यहाँ पे जी सकें। राइट, तो ये है आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2024। 26 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फिर इसी के अलावा याद रखेंगे इस डे को पहली बार 2014 में ऑब्जर्व किया गया था एंड यहीं पे एक ट्रीटी याद रखेंगे, वो था आपका स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी। यूएसए एंड सोवियत यूनियन, जो रशिया एक बड़ा रशिया था, यूएसएसआर जिनको बोलते थे, इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन की गई थी 1994 में, जो कि एक्सपायर हो गई 2009 में। इसका एम क्या था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को, अपने आर्सनल को कम करते जाएंगे एंड एक टाइम बाद खत्म कर देंगे, बट किसी भी कंट्री ने इसको फॉलो नहीं किया। फिर यूएसए ने एंड रशियन फेडरेशन ने फिर से अग्री किया कि हम ये ट्रीटी को फॉलो करेंगे सिंस टिल 4 फरवरी 2026 तक। करेक्ट, बट देखते हैं क्योंकि अभी हालात ऐसे हो गए हैं, हर जगह लड़ाई चल रही है। अभी इजराइल और लेबनान की आप देख रहे हैं कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है, रशिया ने यूक्रेन की लड़ाई आप देख रहे हैं कितनी चल रही है, तो बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पर। 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट्स एंड एक्सपो कहाँ पर हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट फॉर इंडिया 2021-22 2021 एंड 21-22, जो 8th एडिशन थी रिपोर्ट का एंड 9th एडिशन था रिपोर्ट का। देन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, इन्होंने चेयर करी अ रिव्यू मीटिंग, जो कि पहली मीटिंग थी ऑफ द यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम CPAC की। देन इंडिया रैंक 3rd इन द एशिया पावर इंडेक्स 2024 के लिए, यूएसए ने टॉप किया एंड चाइना 2nd पोजीशन पर है। NIPL एंड ट्रिनिडेड एंड टोबैगो TNT इन्होंने पार्टनर किया ताकि UPI जैसा पेमेंट TNT में डेवलप किया जा सके। PNB इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। BOB कार्ड, जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इन्होंने रुपे के साथ पार्टनर किया ताकि EMI फीचर को लॉन्च किया जा सके ऑन UPI पेमेंट। देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की कोटक लाइफ के साथ ताकि लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा सके। देन इंडिया ने एक्सटेंड किया $50 मिलियन का बजटरी सपोर्ट टू मालदीव्स फॉर अनदर ईयर। सेबी इन्होंने अलाउ किया म्यूचुअल फंड्स को कि अपने CDS को सेल कर सकते हैं ताकि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड लिक्विडिटी है उसको बढ़ाया जा सके। एक्सोस्टोमा सेंटियोने, ये नई कैटफिश स्पीसीज है जो कि नागालैंड में डिस्कवर की गई। देन आ जाते हैं इटालियन स्ट्राइकर सेल्वाटोर, जिनको टोटो बोलते हैं, उनका रिसेंटली निधन हो गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्होंने 2 बुक्स रिलीज की, जो कि है जलंधर पीठ का रहस्य एंड मुश्तरका खाटा। ये दोनों बुक ऑथर की गई हैं अजय प्राशर के द्वारा। देन वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। किस शिपबिल्डिंग कंपनी ने अभी लॉन्च किए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट नेम्ड द INS मॉलपे एंड INS मुल्की? तो ऐसे 8 लॉन्च किए जाने हैं, जिसमें से 4th एंड 5th लॉन्च किया गया है। 4th है INS मॉलपे एंड 5th रहेगा INS मुल्की। ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया? तो यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किसने रिसेंटली अभी मेन सिंगल टाइटल जीता US ओपन का? तो मेंस कैटेगरी में होता है, वीमेंस कैटेगरी में होता है। मेंस कैटेगरी वाला जीता गया किनके द्वारा? जेनिक सिनर के द्वारा। ये इटली से बिलोंग करते हैं एंड ये मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। यहीं पे वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो आरिना सेबलेंका, ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से। इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में जीता एंड ये वीमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। नेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन यहां पे आ जाता है। मेंस का पूछा गया है तो मेंस का राइट ऑप्शन है जेनिक सिनर। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूव किया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रपोजल टू एक्वायर एडिशनल स्टेक किस कंपनी में?
एथर कंपनी में। ये एथर एनर्जी क्या है, ये आपके टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। नेक्स्ट, किस ट्राइब को अभी रिसेंटली हैबिटेट राइट्स मिले ताकि वो अपने एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं, जिस फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकें। करेक्ट, क्योंकि वो उनकी एक सेक्रेट साइट है, रिलीजियस ग्राउंड्स है, वहाँ पे स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है विद इन देयर हैबिटेट। तो किस ट्राइब को ये अभी राइट मिला, तो ये है साउरू ट्राइब। राइट, ये कहाँ पर है, ओडिशा में है, एंड ओडिशा की ये 5th ट्राइब है जिनको ये अभी हैबिटेट राइट्स मिले टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर नेचुरल एंटिटीज। Next, who has been recently shortlisted for British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding 2024? तो किनको अभी शॉर्टलिस्ट किया गया इसके लिए, वो है अमिताभ घोष। एंड किस बुक के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया, स्मोक एंड एशेस के लिए। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये जो बुक है ना, स्मोक एंड एशेस, ये बेसिकली जो ओपियम ट्रेड था 18th सेंचुरी में और जो अब तक चला आ रहा है, उसके जो इम्पैक्ट्स हुए हैं उसके बारे में दर्शाती है। नेक्स्ट, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, जो भी अभी देखने को मिली हमें एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, 20वां एडिशन था। इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ है इस एक्सरसाइज। कहाँ पर हुआ, ये हुई महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि कहाँ पर है, एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। 22 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। यहीं पे अगर मैं बात करूं 19वां एडिशन, वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था अलास्का में, अलास्का यूएसए में। नेक्स्ट, इन विच ईयर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च की गई थी 2019 में। ये स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा एडमिनिस्टर की जा रही थी। करेक्ट, LIC के साथ इनका टाई अप था। इस स्कीम के अंडर क्या था कि 18 से 40 साल के जो फार्मर्स हैं उनकी पेंशन्स यहाँ पे लाने की ये स्कीम लाई गई थी कि उनको पेंशन मिल सके जब वो 60 साल के हो जाएं। इसके लिए उनको हर महीने 55 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में, जैसे उनकी एज है उसके हिसाब से ये प्रीमियम बनता है और हर महीने उतनी पेंशन उनको उस फंड में डालना है। एंड उसके बाद जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो 60 साल के होते ही हर महीना उनको 3000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट, विच डिफेंस कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 26,000 करोड़ रुपीज विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 240 एरो इंजन्स फॉर सुकोई मार्क 1 फाइटर जेट, करेक्ट, ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो सबसे पहले याद रखेंगे 26,000 रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। किस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन हुआ है। 26,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 240 एरो इंजन्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। ये कहाँ पे बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे आपके कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ओडिशा में है। एंड ये जो इंजन्स बनाए जाएंगे ना, ये सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स में इनको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, विच डे इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो किस डे को डिक्लेयर किया गया है, 6 जुलाई को डिक्लेयर किया गया। और उन्होंने बोला पहली बार हम इसको कब ऑब्जर्व करेंगे, इनॉग्रल एडिशन कब होगा इस डे का, 2025 में। तो 2025 में 6 जुलाई से हर 6 जुलाई को हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। एम क्या रहेगा इस डे का, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि रूरल एरियाज में हम डेवलपमेंट को पहुंचा सकें, वहां पे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अवेयर करा सकें। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द 101st कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो है नेपाल। और अगर मैं बात करूं पैराग्वे, ये 100 कंट्री बनी थी जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था। स्पेन 99th कंट्री बनी थी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च MTS रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी प्रीपेड कार्ड। तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कौन है, तो वो याद रखेंगे अमित शाह हैं। राइट, इनको रिलेक्ट किया गया है, ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा। एंड अभी याद रखेंगे हमने 75 ईयर्स ऑफ हिंदी बीइंग ऑफिशियल लैंग्वेज जो इलेक्ट की गई थी 1949 में, करेक्ट, उसको यहाँ पे ऑनर करने के लिए इवेंट हमें अभी देखने को मिला। करेक्ट, एंड हिंदी ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है एंड इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है इन 1949। इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमंग द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान्स टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को। तो ये है नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इससे क्या होगा, इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखेंगे तो इसकी मदद से जो हमारा
इन्वायरमेंट आपका जो क्लाइमेट डाटा है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करा सकेंगे फार्मर्स को फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, हिमालय दिवस या फिर हिमालय डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, मार्क करके चलेंगे। फिर 29 मई को हम इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें 20 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मून डे। नेक्स्ट, मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, इन्होंने डाइवर्स किया कितने % स्टेक इन मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फॉर 1218 करोड़ रुपीज थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। तो उन्होंने 3.18% यहाँ पे डाइवेस्ट किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू टुगेदर कितना रेज कर सकें थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इन 24-25। तो 10,000 करोड़ यहाँ पे रेज करने की इनके द्वारा बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट होमवर्क पर। 3 करंट अफेयर्स बताने हैं आपको रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। ऑल्सो अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स।